Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 20 February 2021 and I am teaching you chapter number 16 and name of the chapter is weather and season. Weather and season. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we have completed the book exercises of the chapter, that is question number A, tick the correct option. Now then question number B, fill in the blanks, and question number C, match the following. Question number D, give short answer to the following questions. So we have also completed this question in our classwork copy. Now question number E, answer the following questions. Answer the following question. So question number 1, answer the following question. So what do you mean by water cycle? Explain with the help of a diagram. Okay, so what do you mean by water cycle? Explain with the help of diagram. Explain with the help of a diagram what is water cycle. So let's discuss what is water cycle, and after that we will write the answer in classwork copy. So see student, there are 3 states of water, that is solid, liquid and gas. The 3 states of water, that is solid, liquid and gas. So when the water is heated, it change in the form of a vapor.
Okay, when the water is heated, it change in the form of a vapor. So this process is known as evaporation. So the process by which water change in the form of a water vapor on heating. Is it clear? The process by which water change into water vapor on heating, that process is known as evaporation. Now after that, another process, that is, one is evaporation and next is condensation. So next is condensation. So the process in which water vapor change into water, and in evaporation the water is changing into vapor on heating. Okay, now in the process of condensation, water vapor change into water, and this happens on cooling. This happens on cooling. So this is evaporation and this is condensation. Now let's understand the process of water cycle. So student, due to the heat of the sun, now what's happened? Due to the heat of the sun, when water change in the form of a vapor. Due to heat of the sun, water change in the form of a vapor, and when water change in the form of a vapor, it becomes light and it rises up. ठीक है, जब वाटर सन के हीट से चेंज होने लगता है किसमें, वेपर फॉर्म में, देन इट बिकम्स लाइट एंड इट राइजेस अप. सो नाउ what happens now when this water vapor come in touch with the cool air? तो यहाँ पे जो वाटर वेपर चेंज, वाटर जो सन की हीट से किस फॉर्म में चेंज हुआ, वाटर वेपर फॉर्म में हुआ, एंड इट बिकम लाइट एंड इट राइजेस अप. तो यहाँ कौन सी प्रोसेस हुई, यहाँ हमने इवापोरेशन हुआ, बिकॉज क्या हो रहा है, ऑन हीटिंग. Is it clear? Now when these water vapor come in touch with the cool air, then what's happened? Water vapor change in the form of a water. Again the water vapor change in the form of a water. And how this happen? This happen on cooling. So which process take place here, student? That is condensation. Which process take place here? That is condensation. So at the time of on heating, the process is evaporation, and at the time on cooling, the process is condensation. Is it clear? So now what's happened when this this water come in touch with the cold air, it cools down to form drops of water, tiny drops of water, and student, these tiny drops of water join together to form the clouds. So in this manner the cloud is also formed. ठीक है, क्लाउड कैसे फॉर्म होता है समझ में आया आपको? क्योंकि जब वाटर वेपर कूल होता है, अगेन इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर. सो दिस टाइनी, ये स्मॉल स्मॉल जो पानी की बूंदें हैं, ये आपस में ज्वाइन करके क्या बना देती हैं, क्लाउड्स बना देती हैं. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपन,
inside the clouds the tiny water droplets join to form a big drops and when they become heavy, अब जब जब बहुत हैवी हो जाते हैं तो दे स्टार्ट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ए रेन. सो दे स्टार्ट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ए रेन. सो एंड इन सम प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स एरिया. ठीक है, अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? माउंटेन्स एरियाज की हम बात कर रहे हैं बेटा, जहाँ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है. तो ये जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं ये फ्रीज हो जाते हैं इनटू आइस. ठीक है, ये वाटर ड्रॉप फ्रीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए आइस एंड दे कम डाउन एज स्नो. आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे बहुत बर्फ गिरती है ठंड के समय. ठीक है, पहाड़ों पे बहुत सी बर्फ गिरती है. किस समय गिरती है? एट द विंटर सीजन. ठीक है, इन द विंटर सीजन पहाड़ों पे बहुत ठंड होती है और वहां स्नोफॉल भी होता है. तो द रेन वाटर फ्लो बैक टू द रिवर्स, पाउंड, लेक्स एंड ओशन. अब देखो, नीचे से वाटर इवापोरेट होके वाटर वेपर फॉर्म से ऊपर गया और अगेन दैट वाटर इन द फॉर्म ऑफ ए रेन इट कम डाउन. और ये वाटर कहाँ से था? रिवर्स हैं, पाउंड्स हैं, लेक है, सी है, ओशन है. यही वाटर बॉडीज है ना बेटा हमारे अर्थ के सरफेस पे. तो इन्हीं का वाटर इवापोरेट होके, इवापोरेशन की प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, जैसे रिवर है, पाउंड्स है, लेक्स है, सी है, ओशन है. सो इन सब का ही वाटर क्या हुआ? इवापोरेट करके अप गया था. और जब रेन हुई तो अगेन द वाटर कम फ्रॉम द रेन एंड इट इंटर्स द रिवर, सी, ओशन, पाउंड्स, लेक्स, सब में ये पानी फिर आ गया. सो दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है? डिफरेंट चेंज फॉर्म ऑफ वाटर की ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा होती रहती है. कंटिन्यूअस है, ये कभी स्टॉप नहीं होती. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल. नाउ नोट डाउन द आंसर. Answer. The air heated by the sun rises upwards and carries water vapor. Then the water vapor, then the water vapor so the air heated by the sun rises upward and carries water vapor. The water
water vapor rises, the water vapor rises in the sky, and forms cloud. When these clouds cool, when these clouds cool down, it rains. The whole process continues. The whole process continues in the atmosphere. The whole process continues in the atmosphere. This is called water cycle. Is it clear? See, the air heated by the sun rises upwards and carries water vapor. The water vapor rises in the sky and form clouds. When these clouds cool down, it rains. The whole process continues in the atmosphere. This is called water cycle. This process is known as water cycle. You can take a screenshot also. Now, next part is explain with the help of diagram. So, this is the explanation of water cycle. Now, student, you draw diagram of the water cycle also. So, this is a diagram of a water cycle.
you also draw a diagram of water cycle. In your copy. What is this? These are clouds. What is this? These are clouds. Okay. This is your sun and this is the water. So now see student, see now this is the diagram of a water cycle. This is the sun. So now here what happened, when the due to the sunlight water change in the form of a water vapor and it rises upward, and this process is known as evaporation. That is the reason here I show upward arrows. ठीक है, इसलिए यहाँ अपवर्ड एरो, क्योंकि सन की लाइट जब इस पे आई तो वाटर क्या है, चेंज हो रहा है वेपर फॉर्म में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन. और वेपर फॉर्म में चेंज होने के बाद मैंने ऑलरेडी आपको बताया इट राइजेज अप, दैट इज द रीजन द पोजीशन ऑफ द एरो इज अपवर्ड, एंड इट मीन्स हियर द वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर, and this process by which it on heating it change into form of a vapor, that is known as evaporation. Okay, now see, now this water forms the clouds. So what are these? These are clouds, and these clouds are formed when the water vapor on cooling change in the form of a water, and these tiny drops of water join together to form the clouds. So these clouds are formed, and here due to which process, that is condensation. Okay, condensation. Now see, when these small drops of a water join to form a clouds, inside the clouds when they form a big drops of water, then they start coming in the form of a rain, in the form of a rain. So what is this? This is rain. These drops are of rain, and see this portion, this is what in mountains area I have already explained you. Mountains में क्या होता है, जहाँ वेदर बहुत ठंडा होता है, कोल्ड वेदर होता है जहाँ, ठीक है, तो माउंटेन्स में विंटर के समय स्नोफॉल भी होता है. सी these mountains are covered with the snow. ये टॉप पे जो मैंने दिखाया, this is a snow, because in mountains पे वेदर जहाँ बहुत कोल्ड होता है तो एट ए टाइम. ओके, अब नाउ यहाँ पे देखो वाटर इवेपोरेट होके जा रहा है ऊपर, तो अपवर्ड एरो, हियर द क्लाउड्स आर फॉर्म एंड अगेन द वाटर कम्स डाउन. तो अब कौन से एरो होंगे, डाउनवर्ड एरोस होंगे. So this complete process is known as water cycle. So this is the diagram of the water cycle, and you have to draw this diagram in your
class 4 copy, because here EVS copy is interleaf copy. Okay, so in the right side you can draw the diagram of a water cycle, and if this diagram come in the examination student, then at that time please label it also. Evaporation, here it is condensation, this is sun, this is clouds, these are mountains, this portion this is snow, because in winter snow is fall in the mountains area, and now see from the clouds again the raindrops comes and the water reach to the rivers, ponds, lakes, sea and ocean. So this is the complete answer. That is, what do you mean by water cycle? Explain with the help of a diagram. See? Now after this, next question is, how do season affect on our life? So let's discuss this question. How do seasons affect on our lives? So season affect our life by, see, the food we eat. Our eating habits also changes due to the change in the season. See, I have already explained you, in the summer season we like to drink cold drinks. Okay, and we eat ice cream. But in the winter, what we like to take hot soups, हॉट मिल्क हो गया, हॉट टी हो गई, कॉफ़ी है. सो हॉट सूप हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कब? विंटर सीजन में. ठीक है. और सीजन से बेटा हमारे ड्रेस भी चेंज होता है. देखो, इन समर द वेदर इज वेरी हॉट, सो एट दैट टाइम वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, बट इन द विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स, बिकॉज एट दैट टाइम द वेदर इज वेरी कोल्ड. So protect ourselves from the cold, we wear woolen clothes at the time of winter season. Is it clear? It also change our activity, and according to the season we also play different types of games, especially in a rainy season when the fields are submerged with the rain water. स्पेशली रेनी सीजन में जब पूरे ग्राउंड्स भर जाते हैं पानी से, तो एट दैट टाइम स्पेशली हम लोग इंडोर्स गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, जैसे चेस है, कैरम है. ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ इंडोर गेम्स को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. समर डेज हैं, विंटर डेज हैं. सो इन एट दैट टाइम स्पेशली, और समर है और स्पेशली रेनी सीजन में बच्चे फुटबॉल भी बहुत खेलते हैं. Is it clear? So lot of things are changed due to change in the season also. Okay, next question we will continue in the next video. Thank you student.